Hi guys, good evening everyone. I think the session has started. Okay, wonderful. I can see some people saying there is a 404 error. Open it in incognito, you will find it. Do not worry, 404 error तब आता है when there are some cookie problems. तो cookie problem की वजह से वो error आ रहा होगा आपका. Do not worry. Open it in another window or in incognito. Let me just tell you what exactly are we going to do today. It's going to be a little different, little long. However, if you are a serious aspirant, phase 2 आपको अच्छे से देना है, सेबी का फोड़ना है, तो आपको 1 घंटे मेरे साथ बैठना पड़ेगा आज. ओके, we'll be sitting again tomorrow and we'll do the same exercise with different sets of questions. For students coming here for the first time, let me just tell you what exactly are you supposed to be doing. Go to my website courses.anujindal.in. यहाँ पे आपको दिख रहा है courses.anujindal.in /learn डाल दोगे तो और फास्ट पहुंचोगे. आप वेबसाइट पे पहुंचे, you will see this on the website. Please do not use your mobile phones because you're going to be writing with me. You're not going to be just listening to me talk. और ये live writing होगी. Therefore, it is very pertinent that you do not use your phones. Use your laptops or a desktop. You will see classes going live soon. English live writing class 17th March 5 p.m. ये live हो चुकी है अभी. या तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो. दिस इज द सेम थिंग दैट यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब. इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग. यहाँ पे एम्बेड किया हुआ है. लेट्स कम ऑन द राइट हैंड साइड. व्हेन यू कम ऑन द राइट हैंड साइड, you can see 17th March test. Okay, English live writing test 17th March 5 p.m. You click on this, you start the test. You're supposed to be starting the test. You're supposed to be taking the test live with me. What do we have in the test today? Let me just explain that first and then we will start. Okay, test में क्या है? There are 3 RCs. A lot of students were saying, sir, आपने RC कम दिए हैं, letters ज़्यादा दिए हैं. I thought let me compensate. Let me provide you a bundle of RCs and see how you respond, see how you practice. Comprehensive set of RCs in 1 hour. So there are 3 questions. 1, 2, 3. 3 RCs. Every RC has, every reading comprehension has 4 questions. एंड में आओगे आपको 4 क्वेश्चंस दिखेंगे. Question 1, 2, 3, 4. Similarly, the pattern remains the same. There are total of 3 RCs. 1, 2, 3, 4. तीनों RCs 40-40 नंबर के हैं. यहाँ पे आपको देख सकते हो 400 मार्क्स वर्ड्स में लिखना है, which means every answer is to be written in about 100 words. So 4 answers, 400 words. Okay. You have a combined time of 60 minutes. अभी टाइमर स्टार्ट नहीं हुआ है. Do not worry. I will be starting with the timer in a little while. Just access this. If you cannot or if you're finding any problems, just let me know. Okay, कोई problem है तो मुझे बताओ. Otherwise, we will be starting with the timer very soon. I'll repeat again. I'll go back and tell you how exactly it is supposed to work. You go to the website courses.anujindal.in. You will see classes going live soon में. This is live. You come on the right hand side. नीचे जाओगे, इंग्लिश लाइव राइटिंग टेस्ट 17th March 5 p.m. इस पे क्लिक करोगे. द टेस्ट इज हेयर. यू कैन स्टार्ट द टेस्ट और कंटिन्यू विद द टेस्ट. ओके, इट इज ऑफ 60 minutes टुडे. 3 RCs, एवरी RC 4 questions. टोटल 12 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं. आज RC ही डेप्थ में प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू स्टे कॉन्फिडेंट व्हेन यू गो फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. एंड आफ्टर 60 minutes I will be checking some of the reading comprehensions. कुछ मैं randomly उठाऊंगा, चेक करूंगा, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा. You will also get to know what are the mistakes other students are making, and through that you will get to know what mistakes you might end up making. Okay, the link in description is showing 404. आप भाई खुद खोल के देख लीजिए. courses.anujindal.in/learn. इतना तो आपको टाइप करना आता है. टाइप करिए और उसको खोलिए. लेट मी जस्ट पुट इट अगेन हेयर. आई होप अभी क्लियर है. वर्ड लिमिट मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं.
1 mark is equal to 10 words, so 100 words मतलब 10 नंबर, 10 नंबर इज इक्वल टू 100 वर्ड्स. ये एक स्टैंडर्ड रेशो है विच इज बीइंग फॉलोड एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड. यही फॉलो होता है. ओके, 100 वर्ड्स पर क्वेश्चन, टोटल 4 क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करेंगे 2 मिनट में. इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स आई विल बी स्टार्टिंग विद आंसर राइटिंग. 1 सेकेंड. ओके, साफ सुथरा है. एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर. लेट अस स्टार्ट विद द टाइमर. इट इज 17:08. ओके, 5:08 हुए हैं. 6:08 में हम लोग ख़त्म करेंगे. एंड द टाइमर स्टार्ट्स नाउ. ओके, द टाइमर हैज़ स्टार्टेड फॉर यू गाइज. 17:08 इज द टाइम दैट वी हैव. 18:08 मतलब 6:08 पे हम लोग ख़त्म करेंगे. If you have any problems, you can let me know in the chat box. Okay, I'll be here. You can easily start with the test now. और मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है. So you can keep this window open another window, और उसमें अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. Bunny, combo, etc. You can call on the number 9999466225. अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, प्लीज लेट दैट हैपन. एस्से हेडिंग देना कंपलसरी है? नो, द नंबर इटसेल्फ इज इनफ. एस्से, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, आपको बस क्वेश्चन नंबर डालना है. यू डोंट हैव टू गिव एनी हेडिंग. टाइटल आपको देना है प्रेसी में इफ इट इज आस्क्ड. ओके. Rishabh, do we have to write conclusion and intro as well in RC? No, it is an answer. You just have to answer the answer. You just have to come directly to the point. Okay? जिस तरह से आप क्वेश्चन आंसर स्कूल में लिखते आए थे उसी तरह से आपको यहाँ पर लिखना है. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग स्पेसिफिक, एनीथिंग डिफरेंट. चलिए, 2 minutes are up. 2 minutes are up. We have 58 more minutes. We have a good amount of time. I hope you have started writing. किसी को problem है तो पूछ सकते हो. Otherwise, we will continue like this for the next 1 hour without wasting any time. और 1 घंटे बाद हम लोग proper analysis करेंगे. Prem Prakash, do we have to write background and RC before answering? Yes, a little bit of background is of course helpful, and it is good if you write a little bit of background. Depends upon the question, depends upon what's mentioned in the reading comprehension. Reading comprehension में enough information है तो background देना अनिवार्य है, important है, useful रहेगा. Okay. ओके, प्लीज कीप राइटिंग. 1 घंटे का है. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग सेशन. इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग राइटिंग फॉर यू, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी नहीं लिखोगे तो कभी नहीं लिख पाओगे. इफ यू डोंट राइट नाउ, you will not be able to write a good answer in your examination. If you are serious about SEBI phase 2, write now. Okay, do not think कि मैं फाइनल एग्जाम में जाके लिख लूँगा, मुझे तो आता है, मैं तो बचपन से लिखता आया हूँ, मैं तो टॉपर स्टूडेंट हूँ, मुझसे तो हो जाएगा. नहीं, आपसे नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे. ओके. Sachin Tendulkar, if he goes and plays a World Cup or even a T20 without practice, he will also get out. He will also fail. So nobody is perfect. We are all humans. We have to practice. Okay. And I'm very very sure that you have been practicing. ये एंड में जो आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा. Agnik, essay should be written in single para, multiple para. Of course, introduction different, body different para, conclusion different para. हाउ विल द एग्जामिनर नो कि आप क्या बात कर रहे हो? आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, या कंक्लूड कर रहे हो? ओके, इट हैज़ टू बी डिफरेंट पैरास. Continue writing. We are done with 4 minutes. We are
We've already completed 4 minutes. We have a long time to go in front of us. 56 minutes still left. आराम से बैठ के लिखिए. Students who are joining now, you can also join in and start writing. काफ़ी time है आपके पास. और after the test, I will be checking your tests. ठीक है ना? मैं कुछ randomly tests उठाऊंगा और उनको check करूंगा. और जिनके चेक करूंगा उनको तो एडवांटेज मिलेगा ही. दे विल get some feedback. Other than that, other students will also get a very important feedback. तो वो जो feedback है आपका, evaluation है आपकी, जो कि टेस्ट के बाद होगी, that will be very useful. Divya, please focus on what we are doing right now. We are focusing on writing for SEBI, RBI. If you're preparing for RBI, of course, this is helpful as well. But let's focus on English writing for now. Okay? चलिए, we are done with 5 minutes. You can continue writing. I will keep talking to you धीरे धीरे बीच बीच में. I will keep motivating you. लोगों का फोकस भी धीरे धीरे बीच बीच में जाएगा. I will come back and I will talk to you. और मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, क्या नहीं करना है. ये टेस्ट नंबर नहीं है टेक एंड गेम्स. दिस इज़ अ डिफरेंट टेस्ट ऑल टुगेदर विच हैज़ बीन क्रिएटेड टुडे इटसेल्फ. ये एक बिल्कुल अलग टेस्ट है जिसमें 3 RCs हैं. खाली RC प्रैक्टिस कर रहे हैं आज. टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ सेशन एट 8 PM ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स. उसमें एक टेस्ट अलग होगा. ये टेस्ट अलग है. ओके. दिस इज इन एडिशन टू द 10 टेस्ट्स दैट हैव बीन गिवन टू यू. ये उसके एडिशन में है. ये उनसे अलग है, उससे ज़्यादा है. तो अगर आप एनरोल्ड हैं, अनएनरोल्ड हैं, डजेंट मैटर. आपके लिए ये एडवांटेजेस है. ये उन 10 टेस्ट का पार्ट नहीं है. येस, देयर विल बी अ वर्ड काउंटर, अभिषेक. चलिए, लेट्स कंटिन्यू राइटिंग. आई विल बी बैक सून. फोकस ऑन दीज 3 क्वेश्चंस. आराम से बैठ के लिखो. 20 मिनट हैं टू राइट 1 RC's 4 क्वेश्चंस, विच इज़ अ लॉट ऑफ टाइम दैट आई हैव गिवन यू. काफ़ी समय मैंने आपको दिया है. आराम से बैठ के लिखिए. वेयर वी हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन, या नीचे है ना, यहाँ पे आपका ये देखिए राइटिंग बॉक्स आ गया नीचे. तो यू कैन राइट हेयर.
I hope you guys are writing properly. We're done with 31 minus 8, 23 minutes. 23 मिनट हो चुके हैं हमारे. We still have about 37 minutes. तो हमारे पास काफ़ी समय है. Keep writing for students who have just joined. मैं आपको बता देता हूँ एक बार. You can go to the website www.courses.anujindal.in/learn. यहाँ पर आओगे 5 PM का सेशन दिखेगा. इसमें क्लास भी है जो आप ऑलरेडी यूट्यूब से ज्वाइन कर चुके हो. एंड व्हेन यू कम डाउन यू विल सी 17th March 5 PM टेस्ट. 8 PM का भी टेस्ट है. प्लीज़ डोंट स्टार्ट दैट. कुछ फ़ायदा नहीं होगा. आई विल नॉट बी चेकिंग दैट नाउ. 5 PM का एक टेस्ट है. यू कैन स्टार्ट दैट. इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैं. उनके 4 क्वेश्चन हैं हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के. सो टोटल ऑफ 12 questions you have to answer in the next 1 hour. ओके, जिसमें से हमारे 23 मिनट निकल चुके हैं. जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, डजेंट मैटर, राइट टू. जरूरी नहीं है कि आपको तीनों ही लिखने हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं. 8 बजे एक और सेशन है. दैट इज़ ओनली फॉर एनरोल्ड स्टूडेंट्स. तो जो भी यहाँ पे एनरोल्ड स्टूडेंट्स बैठे हैं, यू कैन ज्वाइन इन फॉर दी 8 PM लाइव सेशन. ठीक है ना. उस लाइव सेशन को हम जूम के थ्रू करेंगे और उस लाइव सेशन में वी विल डू एन एंटायर टेस्ट. पूरा एक नया टेस्ट होगा. इट विल बी लाइक टेस्ट 11 फॉर द अपकमिंग सेबी एग्जामिनेशन. इफ यू आर एन RBI एस्पिरेंट, नाबार्ड एस्पिरेंट, इवन देन यू कैन अटेंड दिस सेशन. आपके लिए यूजफुल होगा ही होगा. ओके. AI वगैरह यूज़ नहीं होता है भाई. इट्स ऑल मैनुअल. इट्स ऑल डन बाय ह्यूमंस. इतना हाई फाई सिस्टम नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह नहीं लगाते हैं. इट्स ऑल डन बाय ह्यूमंस लाइक यू एंड मी. ठीक है ना. तो एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, who are invited to check, evaluate the papers, and they evaluate the paper for you. I hope you guys are writing regularly. अगर थक गए हो, take a break of 30 seconds, 20 seconds. Put your, take out your glasses, put everything down, and just breathe for 5 10 seconds, 10 seconds. लंबी लंबी सांस लो. You will find your focus back. Okay, 30 seconds are more than enough to find your focus back. That's what you have to do. Yash is saying your RBI Grade B course is very costly. भाई जितना कंटेंट मैं देता हूँ मुझे लगता है कि आई एम प्रोवाइडिंग इट एट वेरी लेस कॉस्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड द अमाउंट ऑफ द स्केल ऑफ टीम दैट इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग द कोर्स इज ह्यूज. ठीक है ना. आप UPSC का कोर्स लेने जाते हो, यू ईजिली पे 1.5 लाख 2 लाख. ठीक है. वाई डू यू डू दैट? बिकॉज यू नो दैट द वैल्यू दैट दे आर प्रोवाइडिंग फॉर अ ईयर इज़ वर्थ दैट मच. तो RBI के लिए क्यों नहीं पे करते हो? आपको बुक्स वगैरह भी भेजते हैं हम लोग. वी आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन यू, वी आर स्पेंडिंग सो मच एफर्ट ऑन यू. आपको ये जो सब लाइव राइटिंग का ये जो सब दिख रहा है, दिस ऑल ऑफ दिस हैज़ कॉस्ट. इन सब की कॉस्ट है, इन्वॉल्व है सब कुछ. एंड देर इज़ अ बिग टीम, देर इज़ अ ह्यूज टीम, वेरी स्पेशलाइज टीम इन्वॉल्व है. ओके. कॉस्टली आपको लगता है बट मुझे लगता है बहुत सस्ता है बिकॉज वी नो एट द बैक एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी स्पेंडिंग ऑन क्रिएटिंग द कंटेंट. और जितने स्टूडेंट्स आते हैं और उसके बेसिस पे हम किस तरह से सर्वाइव करते हैं. Asta is saying in our answers can we add information relevant to the topic not mentioned in the comprehension? Yes, you can, if there is an if here, if the comprehension does not have enough information. Your first priority is to provide information available in the comprehension. If the comprehension does not have enough information, then you can add other information as well. Okay. चलिए कंटिन्यू राइटिंग. इट्स 5:36, मतलब ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं. हाफ टाइम हो चुका है, हाफ टाइम बचा है. कीप राइटिंग गाइज एंड वी विल बी इवेल्युएटिंग द टेस्ट आफ्टर 60 मिनट्स. मैं आपके टेस्ट सारे कुछ उठा के रैंडमली इवेल्युएट करूँगा. जिनके इवेल्युएट होंगे उनको फ़ायदा होगा. All whatever students write the test, they can learn from other students' mistakes and other students' good writing as well. Okay.
Diksha, I have joined late. Can I write the test after a while? You can write the test anytime you want. Evaluation अभी 60 minutes के बाद ही होगा, जितना भी होगा, बाद में नहीं होगा. Live evaluation होगा. I'll pick up some tests and I will evaluate those tests in front of you live in the class itself. Okay.
Hi guys, so we are almost done. It's 5:58. We have 10 more minutes to go. And after 10 minutes, I will be starting with your evaluations. Okay. We have about 9 more minutes to go. Mamta is asking, can we use data in Prezi? Yes, of course you can. जो भी data comprehension में दिया हुआ है, you can use that data in Prezi. Additionally, data डाल सकते हो if you feel it's very super important. But if there is enough information in the paragraph itself, then use that. Seven more minutes to go, guys. It's okay, Adhya, even if you're not able to complete the test, you can submit it. हो सकता है मैं आपका टेस्ट उठा लूँ. It is completely random. I will just pick up any test and solve that test, evaluate that test in front of you. Anshul, I will be answering that in the evaluation that I'll do after this session. इस सेशन में 8-6 मिनट बाद जो हम evaluation करेंगे उसमें मैं ये सारे questions आपके आंसर करूँगा. Don't worry. Saloni, we can add information which is not in the paragraph, but only if the paragraph does not have enough information. If the paragraph has enough information, तो फिर कोई point नहीं बनता है ज़बरदस्ती additional information डालने का. Okay? We have about 5 more minutes to go. Mukund, of course, it's better if you start after your postgrad or simultaneously with your postgrad, because you have a good backup, you have
enough education as well. But it's a complete personal choice. A lot of students start immediately after their graduation and clear the exam. And simultaneously, there are a lot of students who start after their post grad and they also clear the examination. So it's a personal choice. It's your life. You have to decide. Yes, starting after your post grad or with your post grad is beneficial क्योंकि maturity आ जाती है ज़्यादा. So the examiner or the interviewers or even in the entire process of examination, you act more maturely. You have more knowledge. You can use that knowledge better. Okay, perfect. फ्रॉम वेयर वी कैन प्रैक्टिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, ये प्रैक्टिस ही चल रही है 1 घंटे से. तो यही आप कर लोगे अगले 2 दिन तो भी काफ़ी है. पीछे ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ. ये देखो 7 मार्च से स्टार्ट हुआ था. 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च. 12 मार्च को तो पेपर 2 का था. तो 11 मार्च तक चले थे और आज फिर से स्टार्ट हो गए हैं. So there are enough tests. If you can practice these tests alone, you will be good to go. Okay. सिगुराम प्लीज़ चेक द नोटिफिकेशन. आप अभी इतने एजुकेटेड हैं कि आप नोटिफिकेशन ऑफिशियल जाके देख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं. सेबी इज़ ग्रेड ए, आरबीआई इज़ ग्रेड बी. ओके, अ करेक्शन देयर. वी हैव 3 more minutes टू गो. आराम से लिखिए, डोंट बी इन अ हरी. आई होप मेजॉरिटी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट. ज़्यादातर लोगों ने कंप्लीट कर दिया है टेस्ट अपना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश दैट यू कंप्लीट द टेस्ट इन 60 minutes. इसलिए मैंने आपको आज 60 minutes में पूरा टेस्ट दिया है. इवन इफ इट इज़ ओनली आरसीज, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप पूरा टेस्ट 60 मिनट में कंप्लीट करें. दैट होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस. ओके. यश इज आस्किंग व्हाई आरबीआई ग्रेड बी स्टफ. इट्स अ ग्रेड बी जॉब. इट्स नॉट अ ग्रेड बी जॉब. ग्रेड बी एंड ग्रुप बी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट. ओके. आरबीआई में जो ग्रेड्स होते हैं वो उल्टे होते हैं. यू स्टार्ट विद असिस्टेंट, उसके ऊपर ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, डी, ई, एफ, जी, इस तरह से ऊपर जाता है जे तक. ओके. इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इट्स ग्रुप नॉट ग्रेड. ग्रुप ए इज द टॉप मोस्ट, फिर उसके नीचे आता है ग्रुप बी, सी, डी. आई होप नाउ इट्स क्लियर. वी हैव 2 more minutes टू गो. 2 मिनट बाद हम लोग वी विल स्टार्ट विद the analysis. We will start with the evaluation. We have 1 more minute to go and then I will start with the evaluations. Time is up. Let us start with the evaluations now. I have received a total of 41 submissions. So let me see time क्या क्या है आपका. जिन लोगों ने 28-30 मिनट पहले सबमिट कर दिया था उनका हम बाद में चेक करेंगे. I want to check papers who have been more consistent or more serious with their attempt. So
8 मिनट पहले वाला उठाते हैं, चंद्रेश पांडे, ठीक है ना। So I'm picking up this test. There are a total of 3 questions. First question उठाएंगे हम चंद्रेश पांडे का, not all the 3 questions. What is the first question in the first RC? पहले reading comprehension देख लेते हैं and then we will start with the evaluation. Let me zoom in a little bit. Okay. The question says UPI service which was limited to smartphones to date. UPI which was limited to smartphones will now be available for feature phones without internet, courtesy RBI. The service is expected to benefit 40 crore feature phone users and is likely to increase digital financial inclusion, especially in rural parts. तो ये हो गया advantage UPI 123 का. The initiative is envisioned to accelerate the process of digital adoption. UPI as a mode of payment has become one of the most popular methods. Now they're talking about UPI. What is it? Comprising more than half the retail payments in the country. However, the offering by NPCI is limited to internet-enabled smartphones. Also, interestingly, 78% of merchant payments via UPI for the month of February were of less than 500 in value. Details about UPI. The availability of the service on feature phones without an internet connection could help in penetrate into rural areas. Another advantage. According to RBI Governor, UPI recorded more than 450 crore transactions worth XYZ, almost double when compared to a year ago. What is UPI 123? ये बात की गई है इसके आगे. Is a 3-step method to initiate and execute services for users. It includes calling an IVR number, app functionality in feature phones, missed call based approach, and proximity sound based payments. The missed call feature would allow phones to access their bank accounts. So these are all features of UPI 123 Pay. Okay. चलिए questions पे आते हैं. Let's see how has Chandresh answered the questions. Explain the role of information and technology in modernizing financial services in India. So information technology IT का क्या role है in modernizing financial services? Let's see what has he answered. IT has helped in proliferating the process of digital adoption. In India, it has created a deeper and inclusive ecosystem for financial services. It has further increased digital penetration in rural areas with the help of various modes of payment such as UPI. ठीक है, अच्छा लिखा है. Further, IT has created an infrastructure which has resulted in ease of conducting financial transactions. ठीक है, this has been successful due to mobile banking. Moreover, increased in digital transaction volume is the result of role of IT in modernizing financial services. I think he's touched upon a good number of points. Penetration, more access, ease of conducting financial transactions, मोबाइल बैंकिंग, इन सारी चीज़ों की बात करी है. सो आई वुड से दैट ही इज़ रिटन अ डिसेंट आंसर. थोड़ा लेंथ कम है आंसर की. 10 मार्क्स का है, आई थिंक 10 मार्क्स का है. येस, लेट मी सी, लेट्स कंफर्म. येस, 40 मार्क्स टोटल, 4 क्वेश्चंस. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग 100 वर्ड्स. तो अगर 100 वर्ड्स है तो ठीक है, बट थोड़ा कम लग रहा है. ओके, लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. What are the various initiatives taken by Government of India and RBI for digital penetration of financial services in rural India? तो RBI और गवर्नमेंट ने डिजिटल पेनिट्रेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? Government of India and RBI have encouraged, not has encouraged, because these are two different entities, digital penetration of financial services by following the various methods. A, UPI, one of the most popular method. This can be gauged from the fact that more than half of the retail transactions. B, UPI 123 Pay. It has been introduced to further penetrate the isolated rural areas. अब यहाँ पर, because it's an open-ended question where they're saying, okay, what are the steps taken by the government and RBI for digital penetration? और क्योंकि हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बस एक UPI की बात हुई है, you can write more steps which are not mentioned in the reading comprehension. So ऐसे आपको you have to identify, okay, what are the more open-ended questions, what are more specific questions. जितने भी open-ended questions आते हैं, वहाँ पर you have the scope and the examiner is also expecting कि आप कुछ extra information दे के जाओगे, okay? Because वहाँ पे various steps पूछे हैं. Reading comprehension में only one step is being talked about, so of course they're expecting कि आप 2-3 steps और बताओगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं. लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज यूपीआई 123 पे सर्विसेज लॉन्च बाय आरबीआई एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स? ये तो डायरेक्टली
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से ही पूछा है, फीचर्स बताए हैं सारे. UPI 123 is a new initiative to further enhance digital penetration of digital financial services. It is a payment method which focuses upon overcoming lacunas in its predecessor UPI. It does so by providing services to feature phone with lack of internet. It can be used by IVR, app functionality, missed call based approach, and proximity sound based options. However, it lags behind its predecessor on one aspect. It lacks UPI scan and pay function. जो और फीचर्स दिए गए हैं, आई थिंक यू हैव नॉट टॉक्ड अबाउट देम. एक बार ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या फीचर्स दिए हैं. It includes calling an IVR number, app functionality, missed call based approach, proximity sound based. You've talked about this. The missed call feature would allow phones to access their bank accounts and perform routine transactions such as reviewing or transferring funds, regular purchase, bill payments, etc. कि आपको लिखना चाहिए था. You should have written this. Okay. A user just has to give a missed call on the number displayed at the merchant outlet. The customer will then receive an incoming call to authenticate the transaction by entering the UPI PIN. The scan and pay function available on smartphones is not there on UPI. ये आपने मेंशन किया है, बट मिस्ड कॉल फीचर की डिटेल्स जो है वो मिसिंग है. IVR interactive voice response, app functionality in feature phones, missed call based approach, and also proximity sound based payments. Proximity sound based payments, you must have seen them. जिस तरह से वो काम करती हैं Paytm में, I think it's very similar to that. So you could have talked about that as well. So details of the steps or the features are missing. I think उससे length भी अच्छी हो जाती. It would have been easily 100 words or 150 words. So you should have talked about them. Okay. चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स सी व्हाट द फोर्थ क्वेश्चन इज. इन योर ओपिनियन व्हाट पोटेंशियल चैलेंजेस RBI विल फेस इन इम्प्लीमेंटिंग UPI 123? The lack of trust upon formal banking. So this is again an open-ended question because इसका reading comprehension में कोई भी जिक्र नहीं है. There is no talk about the challenges that will be faced by RBI. तो इस क्वेश्चन को आपको खुद ही आंसर करना है. You have to figure out what are the potential challenges that RBI as the central bank will face in implementing such a scheme, such a new initiative. Okay, lack of trust, I think good start among rural person will be one of the main potential challenges. Further, poor penetration of telecom in rural area will result in poor communication services. That is not the case anymore. Moreover, digital divide is a big issue which needs to be tackled on an urgent basis for success of UPI 123. I think awareness about banking services, not only lack of trust. They're not aware about it. They don't know that this exists. So, and it is one of the main functions of RBI to increase awareness or enhance awareness of various initiatives. एक major function में से आता है RBI के. So that could have been talked about. Basically, it's talking about what are the functions of RBI. वहाँ से ये खींचा गया है क्वेश्चन. तो आपके फंक्शंस क्लियर होंगे RBI के, सेबी के, रेगुलेटरी बॉडीज के, तो इट विल बी इजी टू आंसर. ओके, आई होप इट इज क्लियर. चलिए, so all the 4 questions have been answered, have been checked, evaluated. I would give you decent marks. 40 में से मैं आपको 60% तो easily दे सकता हूँ. I will give you 65%, not 60% also. 60% बनेगा 24, 10% बनेगा 4, 5% 2 to 26. So I would give you 26 marks. ठीक है ना? इतने I think दे सकते हैं. You've done a decent job here. Let's go back and let's try and check some more papers. We will check अभी 3 minutes. Shish 2211. Let's pick up his paper. Question number 2. Okay. Let's see what the reading comprehension is about, and then we will have a look at the questions as well. Okay. चलिए start करते हैं. Web 3.0 is the most hyped technology term in recent times. What would it mean for government tech, that is using tech to provide citizen-centric web services? A blueprint called the India Digital Ecosystem Architecture was released recently by Ministry of Electronics. Provides a few clues. The document outlines how the government should architect its digital infrastructure for Web 3.0 era. तो exactly है क्या Web 3.0, objective क्या है? A distributed, adaptive, open, socio-technical
system with properties of self-organization, scalability, sustainability, very vague. Okay. To cite a rough analogy, today's government tech platforms like Aadhaar and UPI, though built using open source software and interoperability principles, are akin to a tightly choreographed orchestra controlled by a single conductor. कुछ समझ नहीं आएगा. Difficult reading comprehension. The next generation of GOV tech platforms built using EA 2.0 design principles could be more akin to a jam session. While it doesn't explicitly name Web 3.0, EA 2.0 report seems to have embraced the principle of decentralization. यहाँ पे आके आपको जिस्ट बताया जा रहा है कि exactly है क्या decentralization. That is the biggest promise of Web 3.0. The early web was a connected platform where people could access information and start interacting with each other. However, it was mostly a collection of static websites. Web 2.0, also sometimes called social web, gave us platforms like Google, Amazon, Facebook and Twitter. अब आता है Web 3.0 जिसके बारे में यहाँ बात की गई है. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली. काफ़ी लंबा और काफ़ी कंफ्यूजिंग ये पैराग्राफ है. इसको आंसर करना must be a difficult job. What are the main differences between the three web eras? Explained by mentioning various developments that took place in each era. ठीक है. Web 1.0 was more of a connected platform. Okay, he's answered only two, and I think second भी पूरा नहीं है. Let's check only first one. Web 1.0 was more of a connected. Do not use सच कॉलोकियल या फिर इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है. आपको फॉर्मल लैंग्वेज थोड़ी सी यूज़ करनी है. ओके. वेब 1.0 वाज अ कनेक्टेड प्लेटफॉर्म, अ सेट ऑफ कनेक्टेड प्लेटफॉर्म्स. ठीक है ना. जैसे आप बुक्स में पढ़ते हैं वैसा लिखोगे तो बेटर है. प्लेटफॉर्म काइंड, व्हाट डज इट मीन काइंड? वेयर पीपल यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन and interacted with each other. It was a collection of static websites. Web 2.0, also known as social web, made the web more dynamic and interactive by giving all these three different platforms, whereas Web 3.0 is expected to be more decentralized, secure, and provide users great control over the data. थोड़ा explanation छोटा है. Okay, it is too brief. As an examiner, I would be expecting a lot more because number one, the weightage is higher, 10 marks, 100 words at least. तो आपको ज़्यादा लिखना चाहिए यहाँ पे. आप ज़्यादा लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाओगे. ओके, लेट्स कम टू अनदर टेस्ट एंड फिगर आउट क्वेश्चन 2 के आंसर किसी ने पूरे किए होंगे अगर तो. अक्षय सिंकर का उठाते हैं. लेट्स सी. सेकंड, फर्स्ट लेट्स सी इन्होंने सारे किए आंसर या नहीं किए. इन्होंने भी खाली फर्स्ट किया है आंसर. लेट्स लीव इट. अमित रंजन का उठाते हैं. लेट्स सी इफ ही इज आंसर्ड ऑल द 4. इन्होंने आंसर नहीं किया है. तो देखिए, यू आर लूजिंग आउट ऑन योर ओन. वी रोहित रेड्डी का उठाते हैं. लेट्स सी इफ ही हैज आंसर्ड. ओके, ही हैज आंसर्ड. चलिए यहाँ पे देखते हैं. लेट्स सी हाउ ही डज. If a person can answer these questions, then he can answer anything in reading comprehension because this is a difficult passage. Okay. Differences. First question was, what are the major differences between the three web eras? Number one, Web 1.0 was a connected platform where people used to access information and interact with each other, and it was mostly a collection of static pages. Web 2.0, also called as social media, is more dynamic and interactive in nature. It gave rise to social media platforms, which in turn turned into monopolies. Okay, your own information, it's fine. Web 3.0, when compared to previous version, is more decentralized, more secure, and provides greater control to the users with their information. Decent answer. देखिए सेम लिखा है but organization better है. That is why I would want to give more marks to this answer than the previous answer. तो organization बहुत matter करता है. Second question, what are the issues related to cyber security and data protection? Also mention various schemes proposed by the government of India on it. Issues related to cyber security, data protection. Issues related to cyber security and data protection are lack of control of user over his information, especially in Web 2.0 when various social media access
Social media platforms can access user information without asking for consent from the user. Measures to tackle this problem is to set up a specialized government institution which holds accountability and is professionally run by the state. Good answer, but बहुत briefly लिखा है. Let's see कि हमारे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें ज़्यादा डिटेल में मेंशन किया है या नहीं. The need for a federated architecture approach to preventing risks that arise with large-scale data centralization, such as hacking of data. आपने hacking की बात नहीं करी. Honeypots and surveillance. Second, it proposed the concept of federated identities in order to optimize the number of IDs a citizen needs to have. इसकी बात नहीं की. While the details of this need to be understood, the idea that citizens can choose a limited set of IDs that they trust to use for various is a promising one. It recognizes that building capacity within government for a new generation of requires new competencies and proposes a module-based approach to upgrade skills and change mindsets. India needs deeper thought on some of non-tech elements of governance and community engagement. बहुत सारी चीज़ों की बात की गई है जो आपने नहीं डिस्कस करी. और ऊपर जाते हैं. Let's see what else do we have. ये हमने डिस्कस कर लिया था. Citizen-centric services. So you've left some information which was available in the comprehension. Decent answer, but not very, very great. Okay, first was better. India Digital Ecosystem Architecture, INDEA, is a paradigm shift in technology architecture. In light of the argument, explain the features of Web 3.0, how it will help in efficient digital ecosystem. Web 3.0 के features बताने हैं आपको simply. The information is highly decentralized, which will help the major part of data to be unaffected during a cyber attack. Good. It is more secure when compared to previous versions. The user has a right to consent on the data involved, and large corporations don't mishandle the data for monetary gains. ठीक है, decent answer. कुछ information again missing है. There are more points which are given in the paragraph which could have been included. But I think it's a decent answer because it's a difficult comprehension. तो काफ़ी अच्छा attempt मैं बोलूँगा. And I would give you 60% marks as well. Okay? तो यहाँ पे 40 में से आपको 24 easily मिल जाएंगे. Let's go back and let me check. अब चेक करते हैं ऋषभ का आंसर. Question number 3. Let's see if he has answered question number 3. Yes, he has. So let us check his answers and see how he has performed. Okay. What is the question about? It is predicted that India will become more urban than rural by 2046. Rapid urbanization has been associated with increased contribution to national GDP. यहाँ पे बताया गया है कि प्रॉब्लम्स क्या होने वाली हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. द एडवांटेजेस आर मेंशन्ड हियर एंड देन दे स्टार्ट कमिंग टू डिसएडवांटेजेस. ओके, हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत कम है. Why urban health needs to be a key priority for policy makers. हेल्थ के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं. And again, they're talking about health and how different parts of the society, whether it's the government, civil society, academia, all these need to engage for better development in the urban areas. I think आपने सबने टेस्ट लिखा है सीरियसली, तो आपको सबको पता ही है कि एग्जैक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हुआ क्या है. Let's come and have a look at the questions. The first question is, what are the major causes of urbanization in developing countries? Urbanization के causes क्या हैं? Urbanization is the increase in urban population as people from rural parts of the country move to urban areas in search of better opportunities that can provide better income. Beautifully written. Urbanization define किया है. Background information बोल सकते हैं इसको हम. Before talking about the features, before talking about what was the question? 1 second. Causes of urbanization. Before talking about causes of urbanization, the student has defined urbanization. बहुत अच्छा काम किया है. I think kudos to you. Automatically, I would want to give you 70% marks. Okay, but आगे देखते हैं. People expect a better living style as they move to urban areas. However, unplanned influx of rural population puts undue pressure on resources in urban areas.
अब क्वेश्चन क्या था, आपसे पूछा गया था कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। आपने कॉजेज बस डेफिनेशन में बता दिए कि कॉजेज क्या हैं। देयर आर वेरियस कॉजेज, पुल कॉजेज, पुश कॉजेज, वो आपने डिटेल में नहीं बताए। ओके, हेल्थ बेटर मिलती है, एजुकेशन बेटर मिलती है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, भाई डिटेल में बात करो, आपको पता है वो सारी चीज़ें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिस्पाइट बीइंग regent of economic growth, urbanization is considered as a challenge? What are the major steps taken by the government to address the issue of increasing urban population? दो क्वेश्चन हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ओके, urbanization challenge क्यों है नंबर वन, and what are the steps taken by the government? Let's see what has he answered. Urbanization of population is a challenge because it can cause the problem of limited resources for a bigger population. The migratory population is forced to live in inhumane conditions and slums which are prone to several hazards. The huge influx has put undue pressure on limited health infrastructure, which is the main reason of a huge out-of-pocket expense ratio in the total health spending in India. The government has addressed the issue of pressure on health infrastructure, and the latest family health survey shows that the performance of urban areas on institutional births has significantly improved over the previous survey results. यहाँ पे डिटेल में आरसी में बात की गई है about the steps taken by the government, the challenges that the government is facing, to what ratio, to what proportion their steps have been successful, but वो डिटेल में आपने नहीं बताया. But decent answer. I would give you decent marks for this because question काफी लंबा था. There were two questions in one question itself. Third पे आते हैं, is planned and smart urbanization important to achieve SDGs? Explain using suitable examples. Let's see. In order to achieve the sustainable development goals, urban health should be a key priority. It is important to ensure that out-of-pocket expense ratio is low, as more out-of-pocket expense on health-related issues can push the vulnerable group into poverty. Poor cities generally lag behind in terms of health equality. Decent answer, but question reading comprehension आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो दी गई थी जो आपने नहीं मेंशन करी, probably because of lack of time, but don't do that. Okay. Urbanization, besides multiple benefits, also causes various diseases. Elucidate. क्या क्या diseases होते हैं? They are forced to live in poor conditions due to limited resources and are subject to health issues living in poor conditions. भाई क्वेश्चन में डिटेल में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में डिटेल में बताया गया है अर्बनाइजेशन के हैज़ार्ड्स. ओके, क्या क्या हेल्थ इश्यूज लोगों को आते हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं. ऋषभ इज सेइंग आरसी हैजंट मेंशन्ड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. वापस आते हैं, लेट्स सी इफ दे हैव मेंशन्ड स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. इफ यस, देन वेयर? वन सेकेंड. somebody is saying कि steps taken by the government नहीं है. Let's come up, एक बार देखते हैं. कई बार these things are hidden. Okay. It can also be a burden on cities. Unplanned expansion pushes migratory population to live in inhumane living conditions and in unregulated slums, mostly areas prone to flooding, accident, industrial hazards. ये सारे problems हैं जो आपने नहीं mention करी other than health. Okay. The impact on people's health and quality of life while straining public health systems. Training public health system, another problem. Not only health, public health system, not built to cater to a growing population. Health expenditure in India account for less than 5% and the level of out-of-pocket spending is 69%. 74% of outpatient care and 65% is provided through private sector. In developing countries, out-of-pocket expenditure is the primary means of financing healthcare. Increases the risk of vulnerable groups. Another problem, high out-of-pocket expenditure. Okay. The COVID pandemic has made every citizen realize why urban health needs to be a key priority for policymakers. It is central to achieving SDGs and linked with at least 38 sub-targets. ये आपको mention करना चाहिए था आंसर में. Corresponding to 15 SDGs, ये भी mention करना चाहिए था. The recent NFHS shows that the performance of urban areas on institutional births improved in NFHS 5 from NFHS 4 in most states except certain northeastern states. ये रहा गवर्नमेंट के स्टेप्स जो आप बोल रहे हो इनडायरेक्टली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. यहाँ से हमने क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना. ये NFHS 5 बता रहा है
दैट इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो इम्प्रूव हुई हैं अर्बन एरियाज में. ऑफकोर्स हवा में तो इम्प्रूव नहीं हो जाएंगी बिकॉज ऑफ सर्टन गवर्नमेंट स्टेप्स. COVID-19 is the most daunting challenge our generation has faced, and our response to it is going to pave the way for a more cohesive, equitable, resilient, and responsive future. Urban settings have all elements of health system, but they need to be brought under the same umbrella. It is very important to ensure that policies and practices encourage innovation and transform challenges and crises into opportunities to engage with businesses, government, civil society, and academia. Health should become an agenda of urban local bodies. अब ये आप बोल सकते हो कि health is a priority, is one of the priority areas for urban local bodies, for the governments, but engagement is still missing because ये यहाँ पे इस तरह से बात कर रहा है. Okay, the approach needs to include non-health sector interventions, mainstream in health and urban policies, infrastructure programs, city planning processes will enable cities to prioritize governance for health. ये सारे steps हैं जो चाहिए, ये सारी problems हैं जो exist करती हैं, आपने mention नहीं करी हैं. Leveraging private and not-for-profit sector in urban areas is of paramount importance. Trained human resources for urban health are the need of the hour. As a first step, cities must partner with academic institutions for research and medical colleges in strengthening service delivery, outreach, and referral mechanisms. Building leaders and champions in urban healthcare are critical to strengthening health systems, achieving universal health and sustainable development goals. अब यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात हुई है, तो आप बोल सकते हो यूनिवर्सल हेल्थ के लिए कौन से हमारे प्रोग्राम्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं. ठीक है ना. आयुष्मान भारत हो गया यूनिवर्सल हेल्थ के लिए, ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं. यू कैन मेंशन दोज. एज आई सेड, if you feel that the question is going beyond the reading comprehension, you have the freedom to provide some additional information. ये जो टॉपर्स बोल देते हैं ना आपको हमेशा कि मैं तो strictly I just stuck with the reading comprehension, that is subjective. Why? Because you don't know कि reading comprehension था क्या, उसके questions क्या थे, उसके answers comprehension से आ रहे थे या नहीं आ रहे थे. Okay, I remember last year, I think in RBI examination, I took an interview of one successful student. He said I stuck with reading comprehension, I did not write anything extra. एक और student, he came in for the interview, he said I wrote my own answers, I went out of reading comprehension, I provided additional information, I think that helped. Both of them got good marks in English. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको you have to stick strictly with the comprehension or you can not go out at all. You can if the information is not available. Okay, यहाँ पर information नहीं है available या minimum है 2-3 point मिले तो उनको आप expand कर सकते हो. I hope that answers. ठीक है. स्पैम चेक इज सेइंग इट वुड बी चेक बाय सॉफ्टवेयर. नहीं, वो सब फेक है. सॉफ्टवेयर ये चेक नहीं करेगा. सॉफ्टवेयर आपको लगता है कि हमारा एआई सिस्टम इंडिया में और स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स में इतना एडवांस्ड है कि वो चेक कर सकता है? पॉसिबल नहीं है. होता क्या है, अ सॉफ्टवेयर लाइक ग्रामरली इज हायर्ड, इज टेकन अप एंड दैट सॉफ्टवेयर चेक्स ओनली द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मार्क करके एग्जामिनर को दे देगा और फिर फाइनली एग्जामिनर, एक बंदा, एक प्रोफेसर, एक टीचर बैठ के आपका आंसर चेक करेगा. ठीक है ना. मैं कई बार बोल चुका हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. चलिए, ये हो गया हमारा टेस्ट 3 चेक. एक लास्ट ले लेते हैं बिकॉज आई हैव अनदर सेशन एट 8 विद द एनरोल्ड स्टूडेंट्स. लेट मी Shubham 8750, let's see if he has answered the questions. Okay, first मैं काफ़ी अच्छे से आंसर किए हैं. लेट अस ट्राई एंड फिगर आउट कैसे आंसर्स लिखें. ठीक है. क्वेश्चन 1 क्या था? क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द रोल ऑफ आईटी इन मॉडर्नाइजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज. Role of IT. IT has helped in modernization of financial services in the following ways. Number 1, use of UPI for payments is done through smartphones. Payments can be done through regular phones also with the help of RBI's UPI 123. Use of IT in connecting with banks can connect with other banks and customer through IT infrastructure. Customers don't have to go to bank for the purpose of payment of bills and other necessities. Decent answer. देखो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट का आंसर देख के पता लग रहा है कि स्टूडेंट की इंग्लिश प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, but he has pulled it off nicely because
what I can figure out is he's written shorter sentences, ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की है. He's talked about different points in the paragraph, in the answer. He's picked up some points which are not mentioned in the paragraph also in order to make the answer comprehensive. I think that's important. अगर क्वेश्चन में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2-3 पॉइंट ही दिए हैं, इफ यू वांट टू राइट मोर यू कैन एंड यू शुड, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन. What are the various initiatives taken by Government of India and RBI for digital penetration? गवर्नमेंट और RBI ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? Various steps. NPCI's UPI is one of the examples of initiatives taken by the government. RBI's UPI 123 is an initiative taken to include rural India in digital transaction. It provides simple platform for payment to those who do not have a smartphone for making online payments. Digital penetration has started as this feature was introduced as there were more transactions of less amount. ठीक है, आई थिंक यू कुड हैव इंक्लूडेड सम मोर स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड आरबीआई, और क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इन दोनों के द्वारा. ओके, which are not mentioned of course in the reading comprehension, but I think it's a decent answer. What is UPI 123 services launched by RBI? What is its main features? Features of UPI 123. It has 3-step method to initiate and execute services. Interactive voice response. Number app is present in feature phones. Missed call based approach where customer gives a missed call on the number displayed. Okay, it does not have a QR code for scanning. I think decent answer again. I would give you decent marks for this. In your opinion, what potential challenges RBI will face in implementing UPI 123? Challenges faced by RBI. Payment can be made by those who are in possession of phone and knows the UPI PIN. Method may not be comprehensible to people in rural areas. Resistance of usage of unfamiliar and new method. ये वाला थोड़ा वीक है, छोटा है तो पता भी लग रहा है. एज आई सेड, अवेयरनेस की बात करना, ट्रस्ट की बात करना, एक्सेस की बात करना, इलिटरेसी की बात करना, लोकल लैंग्वेज की बात करना, दोज आर ऑल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दैट आरबीआई इज गोइंग टू फेस. ठीक है ना, लोकल लैंग्वेज इज गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज अगेन. अब ये पॉइंट्स नहीं मेंशन्ड हैं आरसी में, बट यू कैन मेंशन देम इन द आंसर, तो आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं. मेन जो ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आपका आंसर बहुत छोटा नहीं लगना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार 10 नंबर का आंसर है, ही इज रिटन ओनली 30 words 40 words. ओके, द एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू बी लाइक ओके द information is not available in the comprehension. He'll be like, he could have written more. It's a 10 marker. You could have written at least 100 words, 150 words. Okay, that's the point here. चलिए, I think we're done with today's session. काफ़ी लंबा हमारा सेशन चला, 5 बजे स्टार्ट किया था. It's 6:40 now. I'm going to see you again. Probably tomorrow we'll have another session. I'll pick up another test. कल एक full test ले लेंगे and we will write that test in 60 minutes और देखते हैं कि कौन student कैसा लिखता है. Students whose answers have been evaluated, please take them seriously. Students whose answers were not evaluated, please take the evaluations that I've done here seriously and check your own answers कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. देख लो एक बार अच्छे से, आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट गाइज, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद.